असद इसरत माउस की जरूरत नहीं, आ जाता हूँ अपनी क्लास तो इधर आके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बख्तावर कैसे हैं? सर ठीक था क्या सर ये कल। टाइम आपको सूट करता है? यस सर। देन सर ठीक है ये टाइम, अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। औरों को तो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, बाकी इसलिए आए नहीं है। सर पता नहीं, आप देख लें। हाँ? सर स्कूल भी तो सुबह 8 बजे उठ के आते क्या थे। करना है तुमने? बस हो के काम तुम्हारा। अब मैं क्या कर सकता हूँ ये इसमें? सिस्टम में निकलो ना यार। ये लो सर ये आप मैं तुम्हें देख दूसरा लें, देता हूँ, फिर ये लो बाकी ये लो सबसे खत्म बात हो कर गया। लें। आ रहे हैं अभी तो आने दीजिए बात। सर ये लो, इससे कुछ और चक्कर है इसके लिए। ये भी हो गया, इस पे कर बस कर ले। कपड़े की चीज नहीं है, कर लो कर लो। अस्सलाम वालेकुम हमजा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक। बड़े दिनों बाद नजर आए हो क्लास में। हेलो, जी बड़े दिनों बाद नजर आए हो क्लास में। अभी आ गए। अच्छी बात है बेटा, आ गए हो तो रोजाना आया करो। ठीक। जी, if someone has a question, किसी का क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। नो सर। हेलो, हेलो, if you have any question. नो सर। Yes? सर कह रहे हो नो सर। आवाज नहीं आ रही शायद। Wait a minute, I upload some document, then I will start it. जी, if you have any question related to the equilibrium. किस किस ने इक्विलिब्रियम का लेक्चर अटेंड किया था? कल वाला भी और परसों वाला भी। सर मैंने परसों वाला लिया था। और कल वाला नहीं लिया था, यही ना? यस सर। फिर क्या किया जाए अब आप लोगों के साथ? सर अगर आप थोड़ी सी उसकी कल के लेक्चर की समरी दे सकते हैं तो समरी दे दें, या तो फिर समरी आगे चलें हम। यही थी जो हमने कल पढ़ा, यानी लास्ट में पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने कुछ इक्विलिब्रियम की बातें की थी कि व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम। और कल जो हमने पढ़ा था दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन, that is temperature, pressure, concentration of the product or concentration of the reactant, and the last one is अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ तो फीडबैक दे दे तो आ जाएगा। इतना टाइम थोड़ा लगता है फीडबैक पे, तो आप लोग 5 मिनट लगा देते हैं। तो आप उसको स्किप कर दें, फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है। तो दे देना भाई। अब इसके अलावा तो मेरे पास हल कोई नहीं है कि मैं हाउ कैन। जी हेलो, हेलो,
देर में आप मुझे कॉल करें, इतनी देर में आप फीडबैक दे देंगे। अब पहले आप स्टार्ट तो करें ना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो हेलो। Yes, sir. तो yesterday we completed the fact of the factors, लेकिन फैक्टर अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन यू हैव टू, मुझे पूरा लेक्चर फिर रिपीट करना पड़ेगा, तो उसको हम वक्त के साथ रिपीट करते रहेंगे व्हेन यू नीड इट। अभी या फिजिकल क्लास होगी तो अभी मुझे आगे जाना है और उसमें ये देखना है कि बेसिकली हमने आगे जो कैलकुलेशन पार्ट है, बिकॉज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट प्रीवियस लेक्चर, उसका प्रीवियस लेक्चर से सच को लिंक नहीं, तो इस वजह से हम उसको प्रीवियस लेक्चर को लेकर नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस में या तो आप एक और क्लास अरेंज करेंगे एक्स्ट्रा इसके लिए, या फिर दूसरा यही है कि जब फिजिकल क्लासें होंगी तो उस वक्त मैं उसमें से गो थ्रू हो जाऊंगा। इज इट Okay, क्लियर? sir. Yes, sir. लास्ट में हमने ये कहा था कि these factor can affect, and now we are starting with the equilibrium constant. What does equilibrium constant mean and how can you calculate this equilibrium constant? So we have to start with this equilibrium constant. This equilibrium constant is basically either named as Kc or Kp, is the value of reaction quotient when the reaction has reached at equilibrium. Mean that when reaction is at equilibrium, then it is equal to the constant, and that constant for concentration we say it is a Kc, and for pressure we say it is a Kp. Kc and Kp. But remember this thing, how can you define equilibrium constant? So it is equal to the product of the concentration of products to the appropriate power divided by the product of concentration of reactant to the appropriate power. In an equation or balanced chemical equation that is known as सर ये पूरी equilibrium. लाइन रिपीट करते हैं प्लीज। It is product of the concentration of products to the appropriate power divided by the product of concentration of reactant to the appropriate power, that is known as equilibrium constant. But to understand this one, unless we do it practically mean with the help of this equation, you can't understand it. For example, if you are given this equation, this is N2 and plus H2 plus H2, and this is because this is equilibrium, so this must be the reversible reaction. It is a reversible reaction, and ammonia is formed. The first job of a student is to balance this equation. You have to balance it. For example, this is 2 and here I put 3, so now it is balanced. How can I write equation for this one? That Kc is equal to, Kc stand for equilibrium constant, that is equal to the, what is product here? Here the product is ammonia, so this is the concentration of ammonia. You have to use this bracket for Kc. This bracket that is simply known as the set bracket for Kc. Now what is coefficient for ammonia? Mean this 2 is the coefficient to make it as an exponent, divided by the concentration of reactant like this N2 divide into H2.
here I use the word first product for the concentration of product. The first product means that is the multiplication. Here, and what is its power? It is 3. Is it clear? Hello? Hello? Yes, sir. Is it clear to all? Next one is, other than this, if you are given another equation like this one, for example, if you are given that ethanol, this react with ethanoic acid and we get, Assalamualaikum. walaikum salam, you get ethanol and this ethanol give reaction with ethanoic acid, you get ester plus water. You get ester mean ethyl ethanoate and water. So how will you write equation for this one? Mean first you have to write chemical equation and then you have to write equation for Kc. For Kc that is the way to write this one is again first write the chemical equation like this. This is a chemical equation and then you can write CH3 that is ester CH3 CO O C2H5 C2H5 plus water. Remember this thing when you use the concentration, what should be the unit of concentration? Hurry up please. What should be the unit of concentration? So it is always mole per cubic decimeter. Is it a balanced chemical equation? Is it a balanced chemical equation or not? I think not. Sir, balanced है. Yes, when it is a balanced, so now write equation for this one for Kc. So Kc is equal to, you have to use this concentration bracket, that is a concentration bracket. What is the product? The first product is ethyl ethanoate, that is CH3, concentration of CH3 CO C2H5 into water, because it is also the product, into water, divided by both reactant. Concentration of ethanol, that is C2H5 OH multiply concentration of acid. Is it clear? If you have any question, in this case we don't use any exponent because equation does not include any coefficient. It is a balanced 1, 1, 1, 1, so you don't need any exponent of this one or this one or of the reactant. Is it clear? Yes, sir. Now, how can you find the unit for this one? What are the unit for Kc? The unit of Kc that varies from equation to equation or question to question. For example, in this case, if you write the unit for this one, that is mole per dm cube, mole per dm cube of ammonia, and takes care of this one. Takes care of this one.
divided by this mole per dm cube of nitrogen into mole per dm cube of hydrogen and make its power 3. Its power 3. Because in equation it is given 3. So what should be the unit of Kc here? In this case, this mole per dm cube square is cancelled with mole per dm cube. This 3 में से 2 चले जाएंगे तो पीछे 1 बच जाएगा. उस 1 को 1 के साथ इसके साथ मिलाओगे तो you will get mole square. Because mole into mole and it is present as a denominator, so sign will be negative, and dm6 and this become positive because when this dm cube move upward that become positive. If anyone has a question, hurry up please. सर इसकी यूनिट की नहीं समझ आई. यूनिट में सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है. क्या करना है मैथमेटिकली, आप इसको जैसे आपने इस इक्वेशन को लिखना है इसी तरह लिखेंगे और जो कैंसल आउट होता है उनको कैंसल आउट कर दें. जो बाकी रहते हैं उनको आप एक वे तो ये था कि 1/, हम दिस लिखते, तो 1/, दिस लिखना नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. तो एग्जैक्ट बेटी मैंने यही काम किया है. लेकिन यहाँ क्योंकि पावर स्क्वायर है और यहाँ पावर क्यूब था तो यहाँ स्क्वायर तो कैंसिल हो गया. 1 मोल पर डीएम क्यूब यहाँ से मेरे पास बच गया और 1 मोल पर डीएम क्यूब ये है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मोल स्क्वायर बनेगा. मोल इंटू मोल क्या लिखोगी, मोल स्क्वायर. एंड डीएम क्यूब इंटू डीएम क्यूब, तो फिर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाती होती है जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐड कर दोगे तो पावर 6 हो जाएगी. लेकिन साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज यू आर मूविंग इट अपवर्ड. ओके सर. अब हमने ये देखना है कि सेकंड केस में जो भी मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी थी कि व्हाट इज यूनिट फॉर दिस वन, इसमें केसी के क्या यूनिट होंगे. ये मोल पर डीएम क्यूब है, ये मोल पर डीएम क्यूब है, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब है और ये भी मोल पर डीएम क्यूब है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल. So here in this case Kc has no unit. To mean if you are given a question of the Kc, so first you have to answer it with mathematical answer and then you have to solve the equation to find the unit. Sometime it has no unit and sometime it has different units. Mean question to question the units of the Kc varies. It does not have the constant unit as you studied in the previous concentration as mole per dm cube and mass as gram and volume is in cubic decimeter. But Kc or Kp do not have fixed unit. Is it clear? Hello? Yes sir. Hello. Now we have to start with this one. You are given few questions like this one, that is just a repetition of the same. Here that is equilibrium constant, C stands for concentration. According to this equation, that is A mean that is a coefficient and this small b is again the coefficient, whereas A capital is a reactant, B is a reactant. Here C is a product, D is a product. So in this way you will get what concentration of C mean product 1 into concentration of product 2, and there should be the appropriate power mean the power according to the balanced chemical equation divided by the product of the concentration of reactant to the appropriate power, that is again according to this equation, so that is known as Kc. Kp we will start it after 2-day lecture.
Here first you have to solve this question. Ethanol react with ethanoic acid to form ethyl ethanoate and water. So I will recommend you to first write equation for Kc. Hurry up please. Write equation for Kc. Can you write? Write equation for Kc of this reaction. सर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है ना? जी जी, it is already balanced. सर ये तो इसके जो क्वेश्चन में गिवन है ये मोल्स हैं, तो मोल्स को अब हमने कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर आपने दिया। जो पहले एक मिनट पहले आपको जो कहा कि पहले वो करें, आपने इक्वेशन लिख ली है? यस सर। Now convert this mole into concentration. Convert mole into concentration. What is volume? ये ऐसे नहीं होगा जैसे आप सिंपल से समझ रही हैं। The 500 reaction mixture at equilibrium contain. अब हमें ये देखना है कि at equilibrium पे इसके पास कितना है। ठीक है, तो here we are starting with equilibrium, otherwise we have to start with the initial, वो हम next question में देखेंगे। अब इसमें आप इसकी concentration बनाएंगे। How will you convert it to concentration? कैसे convert करोगे इसको concentration में? So by dividing the mole by volume. Mole by volume, लेकिन volume को किस में convert करोगे? डेसीमीटर क्यूब में। जी तो करें जरा। सर 0.5 होता है। 0.5 ठीक है, 0.235 divided by 0.5, that is ethanoic acid. Similarly 0.350 divided by 0.5 ethanol and 0.182 ये आपके पास ethyl ethanoate, that प्रोडक्ट है, दूसरी प्रोडक्ट है। इन दोनों को आप उसमें कर लें, और इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इन दिस केस if volume of the each one is same, तो फिर मुझे इसको बेसिकली टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ये भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसी पे आ जाता हूँ कि आपके पास इसकी जो भी कंसंट्रेशन क्या है जी, आपके पास मोल कितने थे इसके? सर 0.235 divided by 0.5, नेक्स्ट के 0.235, यही है ना? सर इसके डिफरेंट थे। अच्छा, that is 0.350, sorry 0.350 सर 0.035 था। 0.035 तो पहला भी फिर 0 होगा, 0.5, और on the other side that is 0.182 divided by 0.5,
ये जो वैल्यूज आपके पास आएंगी इसको आप इस नीचे वाली इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हरी प्लीज। हेलो सर ये वाटर और ये हमारे पास दोनों 0.18 है। जी 0.18 है, 0.182 182 है। मार खाने का पूछो। What is the answer? सर 0.25। What are its units? सर एक सेकेंड। सर 9 यूनिट। Very good. Any other student, if you have any problem, any query, you can ask. Hamza, Asad, Nurulan. Who else is present? Abdullah Tayyab. No sir. Now we start with a slight difficult version of the same question, with the same equation. कर खोते मस्ती आई हुई है तुझे अब फिर से। Right question please. First right question, then I will solve it नोट्स दूंगा एक बहुत बड़े in an experiment. अच्छा 60 gram of ethanol per dm cube was added to a flask (60 gram of ethanoic acid per dm cube सर इथेनॉल 6 ग्राम थी और इथेनॉइक एसिड 60 ग्राम है। यस नहीं दोनों 60 मैंने बोले हैं, मैंने दोनों बेटा 60 कहे हैं। ओके सर। The concentration of ethyl ethanoate was 0.44 mole per dm cube at equilibrium. Is it clear? Find Kc for this reaction. Now see here, if such type of question are given, that is C2H5OH, बल्कि I have written it already. ये मेरे पास है जी, मैं इक्वेशन कॉपी नहीं करता, इक्वेशन हमारे पास पहले लिखी हुई है। अब आपने देखना ये होता है कि what is given to you and what is the basic reaction condition. When initially you added 60 gram of each one, means just the reactant, not the product, the
what do you deduce about the concentration of product? For example, if I say initial concentration, so this initial concentration of this one is 60 gram per cubic decimeter. Am I right? Yes, sir. This is also 60 gram per cubic decimeter. If this reaction does not start, what should be the concentration of the product? This is 0. This is 0. Is it clear? Yes, sir. First convert it into mole per dm cube to divide this one. This first one, its MR is 46. 60 divided by 46 is? What is answer? 1.3. Write here 1.3 mole per dm cube. It is 1 mole per dm cube. कैसे टीचर है पठान को ले लिया ओए दूर हो पठान को ले लिया पठान लाला This is 0 and 0. Now what are the mole at equilibrium? and 0 Mole at equilibrium. To lack of space, I will just writing it. I am writing it as a EQ. EQ stand for equilibrium. What are mole at equilibrium? So for this purpose, what is your question? What was the mole of this ethyl ethanoate? Arya, please. मैंने कुछ मोल बताए थे इसके मोल पर डीएम क्यूब इस प्रोडक्ट के सर 0.44 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपने ये देखना है कि अगर ये 0.44 मोल पर डीएम क्यूब है, व्हाट इज रेशियो ऑफ दिस वन एंड दिस वन? एथेनॉल और इसमें कितनी क्या रेशियो है? 1:1 है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और नॉट? Yes, sir. When it is according to this equation 1:1, so it means 0.44 mole of ethanol has converted into this product. ना चला गाड़ी Yes, sir. So what should be the remaining mole? Now subtract this 0.44 from this one, 1.3 minus 0.44, and the same case repeat it with ethanoic acid. Again it is 1:1, so 1 minus 0.44. And here what is the concentration of water? That is equal to this one because that is 1:1, so that is 0.44. सर इक्विलिब्रियम में हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन इक्वल होगी। जी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ हमारे मोल डिफरेंट गिवन थे तो इस वजह से मुझे माइनस करना पड़ा है। और सपोज अगर ये भी 1 मोल होता, मैं 0.44 को माइनस करता तो दैट इज अबाउट क्या आंसर आता? 0.56। यस 0.56 आता, तो इधर भी उतने 0.56 आता। लेकिन इन दोनों की रेशियो आपने देखना है कि दैट इज 1:1 है, तो जितने इसके मोल है उतनी उसके मोल बनेंगे। दीस आर आल्सो इक्वल। जल्दी करें क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑफ होने लगा है, लाइट नहीं है सुबह की, ताकि ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। सर लेकिन अगर अभी हम 1.3 में से ये माइनस करें, मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड की कंसंट्रेशन राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं आ रही? इक्वल नहीं आनी चाहिए। किसने आपको बताया कि इक्वल आनी चाहिए? ओके सर। मैंने डेफिनेशन में ये बताया था कि जी आप इक्वल ना कहें, आप किसी चीज को भी इक्वल ना करें। ठीक है, इक्वल होता ही नहीं है, तो आपके जो है
हम कहते हैं कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। तो इसका क्या आंसर है माइनस करने के बाद? सर 0.86। दूसरे का 0.56। 0.56। तो वो आपके आगे वही गिवन है। इन दिस वे नाउ यू हैव टू यूज दीस वैल्यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेट। किसकी कैलकुलेशन के लिए? आपने केसी, आप उसको यूज करें। मीन बेसिक कंसेप्ट इज कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट केसी तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। नेवर यूज द कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उनको हम यूज नहीं करते इन इक्वेशन। इक्वेशन में सिर्फ आपकी वो कंसंट्रेशन यूज होगी जो इक्विलिब्रियम पे होगी। इज इट क्लियर? यस सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। नो सर। हेलो? नो सर। नो? नाउ do this question number 2. What is the answer of the previous question जो भी मैंने दिया है? Hurry up please. सर 2.48। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। कौन कौन है इस वक्त हमारे साथ? सर हमारी जो है बायो जरा की क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, ठीक है बेटा, आप लोगों की यही हैबिट है। जब भी हम एक पीक पे जाते हैं समझने के लिए तो आपका कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बायो की क्लास है, खुद सबसे लेट गई है। भाई की क्लास ही ना ली। मोटी कांड। मोटी कांड मेरा मतलब मोटी कांड नहीं। बायो साले तेरी बाप की क्लास। बाप की क्लास नहीं है, बाप में बर्ड्स का सिखाते हैं, बर्ड्स कैसे होते हैं और कैसे अपने बर्ड्स को बड़ा करते हैं, ये चीज़ें बताते हैं चले बायो में।